प्रकाशयत्। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Sonu Sood, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह हम अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित दुनिया भर की चुनी हुई ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश की जानी मानी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। वेलकम दीपशिखा। थैंक यू सोनू जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं सोनू सूद। Thank you, Manoj. The top stories of today. The domestic aviation industry has registered an annual growth of 38.27%. Market witnessed strong selling for the third straight session. Sensex was down 570 points. Nifty slumped and reached 19,742. And crude oil prices slipped to $92 per barrel as Fed pauses on hikes again. घरेलू विमानन उद्योग में इस वर्ष के पहले 8 महीनों में 38.27% की वार्षिक वृद्धि देखी गई। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में की गई बड़ी बिकवाली। सेंसेक्स 570 अंक लौट का, निफ्टी भी फिसलकर 19,742 हुआ दर्ज। और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी फिर रोकने संबंधी संकेतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटी, $92 प्रति बैरल के आसपास आई। Market Mantra, Market Mantra. The top story of the day, the domestic aviation industry has registered an annual growth of 38.27% between January and August this year as compared to the same period last year. So far, the number of passengers carried by domestic airlines reached 1,190.62 lakhs in 2023. Last month witnessed a significant monthly growth rate of 23.13%, with passenger numbers soaring to 148.27 lakhs. The Civil Aviation Ministry also highlighted the low cancellation rate of 0.65% for scheduled domestic airlines for the same month. It added that the complaint rate was around 0.23 complaints per 10,000 passengers carried. What would you say, Deepshikha, these figures, 38.27% growth in the first 8 years of 2023, what does this say about the Indian economy, the recovery after the pandemic, and the current state of economic growth? Sonu, fantastic numbers, and these numbers are not isolated. If you see other fast-moving indicators also, automobile sales, freight movement, GST numbers, all have been pointing towards a very robust economic recovery. Now we have festive season also coming up, so consumption is expected to sort of further strengthen. And these airline numbers, we saw post-pandemic, the kind of recovery that we have seen, that has not gotten impacted by any of the sentiment in the stock markets or in the Western economies. The domestic economy remains very robust, and the demand, local demand remains very robust. So travel industry has seen a particular boom, especially which is also seen in some services sectors, but travel definitely, and these numbers are a clear validation of that recovery
recovery that we are seeing. So how far would you attribute the government policies which have, if we talk about Atmanirbhar Bharat or PLI scheme, the policies of the government which have been empowering rather than entitling people? How far do you see this approach of the government, constructive approach, contributing to this kind of a macroeconomic growth? If you take the example of the airline sector itself, the emphasis on making new airports. We have these Udan airports, which are like, small ones which have been opened up. Number of such airports have been opened up, and there's a lot of demand coming from these airports as well. So this overall focus on empowering, creating growth through creating assets or creating growth through providing employment, obviously that is having an impact. Number of measures, while Atmanirbhar Bharat was launched during the pandemic, which will have a long-term impact on the manufacturing of the country, but other measures also, they are beginning to show some impact. This emphasis on self-reliance, we saw that during pandemic in terms of vaccines and other medications, which will have an impact going forward. दीपशिखा जी, कुछ आंकड़े जो विमानन क्षेत्र के मतलब दर्शा रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण है कि एक तो जो शिकायत थी वो बहुत हद तक घट गई है. इसे हम माने कि विमानन उद्योग अधिक मैच्योर हुआ है, परिपक्व हुआ है, सेवा की गुणवत्ता बढ़ी है. बिल्कुल, ये देखने में आ रहा है, क्योंकि आपको अगर याद होगा कुछ समय पहले बहुत सारे लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कि इतना समय लग रहा है, इतनी लंबी लाइन है, और उसके बाद डिजी यात्रा ऐप को रोल आउट किया गया. और अब अगर आप देखें तो जिनके पास डिजी यात्रा है, जिन एयरपोर्ट्स पे डिजी यात्रा की सुविधा है, वहाँ पे मुश्किल से 1 मिनट एंट्री में लगता है और सुरक्षा जांच में भी उतना ही लगता है. और जहाँ तक एयरलाइंस की सेवा की बात है, इस पर ख़ास तौर से मंत्रालय जो है और सरकार की तरफ से उनकी सेवा जो है क्वालिटी रहे, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है. पैसेंजर सुरक्षा पे खास ध्यान दिया जा रहा है, एयरलाइंस पर एक्शन लिया जा रहा है. तो उस सब का मिला जुला असर जो है वो दिखाई दे रहा है कि कंप्लेंट्स जो हैं वो कम हुई हैं. यानी ग्राहक संतुष्टि बढ़ी है. यहाँ $1,00,000 का सवाल दीपशिखा जी ये बनता है कि ग्राहक संतुष्टि तो बढ़ी, लेकिन विमानन उद्योग से जुड़ी कंपनियां हैं, उनकी संतुष्टि का स्तर यानी उनकी मुनाफाप्रदता कितनी बढ़ी, घटी, या तेल के जो दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं उससे प्रभावित हुई है? बिल्कुल, तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे तो जाहिर है कि कंपनियों पर असर पड़ेगा. और दूसरा है कि जो ATF है उस पे टैक्स जो है ख़ास तौर से कुछ राज्यों में थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है. तो ये वो जो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है उसका भी असर उन पर होता है. दाम बढ़ने का तो होता ही है. तो अगर हम देखें कि फ़्लाइट्स की जो कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग है वो भी बढ़ गया है, अगर टिकट्स को देखें तो वो जो एक बजट और वो जो सस्ता जो ट्रैवल था वो उस हद तक अब नहीं रहा है, क्योंकि तेल के दाम बढ़े तो एयरलाइंस भी जो है उसको पास ऑन कर रही हैं पैसेंजर्स को. तो असर तो डेफिनेटली पड़ रहा है, लेकिन डिमांड इतनी रोबस्ट है कि एयरलाइंस को कोई उसमें परेशानी नहीं हो रही. In fact, we have seen so many airlines going through troubled times in the past. So hopefully that is a thing of the past, and we can see more stability in the industry. And as Manoj ji talked about complaint rate being only about 0.23 complaints per 10,000 passengers, and similarly the cancellation rate is also very, very low, 0.65. So how do you see this low complaint and cancellation rate? Is it a testament to the industry's efforts to prioritize customer satisfaction and providing reliable and efficient services to passengers? Definitely. I think airlines are also more conscious about consumer redressal, which is obviously getting reflected in the data. Plus, if you see, there is low cancellation. So obviously people are flying, more people are flying. And with, a huge uncertainty gone in the past in terms of the pandemic, now with the recovery setting in and robust recovery setting in,
those cancellations obviously have come down because travel, official business travel, leisure travel, all kinds of travel has increased. So definitely for the aviation sector, these trends are very healthy. And you feel that maybe the aviation sector, with its economy airlines also, it's also giving some competition to railways, to those customers who were earlier traveling by railways. They have upgraded now. Definitely. So if you actually see long distance travel, people are avoiding. They are preferring airlines over long distance rail travel, which a trend is clearly visible in that respect. For short term, of course, trains remain in preference, and I think that is a strategy with which the Indian Railways is also working. The focus should be on improving quality for short term, focus should be on that. Long distance, of course, the trains are there, and still a large number of India travels on trains. So, but the main focus would be on short term travel in the long run. यानी Yeah, just one observation that multimodal connectivity is the way forward. Definitely, that is the way forward for all, not just passenger but also freight, and I think that is the whole idea with which the Pradhan Mantri Gati Shakti was launched. यानी हमने जो उड़ान सेवा है उसकी चर्चा की, रेल सेवा उसकी भी चर्चा कर ली, तो जो सड़क परिवहन है उसकी भी बात कर लें. हमने देखा है कि महानगरों से छोटे छोटे दूरस्थ शहरों के लिए भी बस सेवा शुरू हुई है. यानी सरकार ने जो प्रयास किए थे कि छोटे शहरों तक हमारे विमान पहुंचे, सरकार ने जो प्रयास किए कि पूरे देश में सड़कों का एक महाजाल स्थापित हो जाए, तो वह भी बन चुका है. और कुल मिलाकर जो परिवहन तंत्र है, चाहे वह रेल सेवा हो, उड़ान सेवा हो या रोड यानी सड़क से संबंधित सेवा हो, हम हर जगह उल्लेखनीय प्रगति देख रहे हैं. ऑटो सेक्टर के आंकड़े क्या कह रहे हैं? ऑटो सेक्टर के आंकड़े अगर आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और खासतौर से इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े अगर देखें, तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो है वो बढ़ ही रहे हैं. टू व्हीलर सेगमेंट में भी हमने देखा कि थोड़ा बीच में लग रहा था कि धीमा हो रहा है, कंसर्न्स आ रहे थे, लेकिन फिर से बढ़ना शुरू हुआ है. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं गाड़ियाँ, फाइनेंसिंग आसान हुई है, हालांकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग खरीद रहे हैं. तो वही दर्शाता है कि इकोनॉमी में डिमांड जो है, ऐसा लग रहा था कि पैंडेमिक के बाद एक पोस्ट पैंडेमिक डिमांड बूस्ट आया है, रिकवरी, पेंटअप रिकवरी है और वो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं. मॉनसून को लेके बहुत कंसर्न्स थे, वो भी कंसर्न्स अब चले गए हैं. तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब उन्होंने जो भारत की ग्रोथ रेट थी उसको घटा दिया था, अब वो जो अपने प्रोजेक्शंस हैं उनको वापस रिवाइज कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं. You just mentioned PM Gati Shakti project. Now that is a multimodal, infrastructure development project based on digitization. So how do you see this kind of, infrastructure development? We always talk of Keynesian economics, like the government laying so much stress on capital expenditure. You feel that is going to be the bedrock of India moving forward at a fast pace, even in the coming years, in the coming budget? Definitely, and I think that strategy of the government is having an impact on the ground. If you see, from pandemic onwards, private investment had slowed. It was barely sort of happening. So government stepped in, it infused a lot of capital in form of capital expenditure on large infrastructure was a key focus area. And now we are seeing and there is a lot of anecdotal evidence on private sector investments slowly sort of kicking in some sectors at least. So the strategy has definitely paid off, because at a time when private sector did not have the means to invest and demand had fallen, so government sort of stepped in, and that strategy obviously will have has shown impact. And also, the infrastructure creation. The focus on infrastructure creation also has, a trickle-down impact on a lot of industries, steel, cement, and so on and so forth, plus job creation. Right. So that strategy is definitely showing its impact. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार. पहले घरेलू शेयर बाजार.
देश के घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज भी बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक आधी फीसदी से अधिक गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 1% और निफ्टी भी लगभग 1% नीचे आकर बंद हुए। बैंकिंग, ऑटो और फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 0.8% यानी 570 अंक घटकर 66,230 अंक पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक यानी 0.8% नुकसान के साथ 19,742 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों 0.9% घाटे के साथ बंद हुए। As Manoj just told you, the market witnessed strong selling for the third straight session on September 21, with all sectors ending with losses. The Nifty and Sensex lost around 1%, with the Nifty falling below the 19,750 mark. Banks, public and private, auto and pharma were the worst hit sectoral indices. At close, the Sensex was down 570 points or 0.8% at 66,230, and the Nifty was down 159 points or 0.8% at 19,742. In the broader market on the BSE mid-cap index and the small cap index both fell 0.9%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 6 companies appreciated, while the rest 24 declined. Tech Mahindra gained 1.4%, Asian Paints and Infosys both rose 0.8%, and Bharti Airtel advanced 0.7%. On the other hand, Mahindra and Mahindra declined 3%, ICICI Bank slumped 2.8%, and SBI fell 2.1%. In sectoral indices at the BSE, only one sector gained, while 19 logged losses. Only tech sector gained 0.06%. On the other hand, BankX declined 1.75%, auto sector fell 1.58%, and financial services sector lost 1.35%. The overall market breadth was negative as shares of 1,317 companies appreciated and 2,337 companies declined. A total of 139 shares remained unchanged. Deepshika, till Friday, we were seeing a winning streak in the market in September. 11 sessions straight, there was a rise in Sensex, Nifty, and Nifty also crossed the psychological level of 20,000, closed above that. What has happened this week? What are the worries for the market? I think the latest development which is playing on the markets, especially today, is of course the US Fed report. So from what we understand from, what cues we take from the US Fed is that there could be possibly one hike, and the interest rates will remain higher for a long time. So the stance is sort of moved from high to longer, from to higher to longer. So that is, I think, making markets nervous because an hike was ruled out. There were some indications that it may not come about, but now it looks like it may come, one more hike may come. So that nervousness is obviously reflecting on the markets. We've seen that happen globally, and that has impacted the Indian markets as well. So you think the pause is there, but it's a hawkish pause? Definitely. It is. The language is very hawkish, especially because the concerns on the inflation have not, the Fed's view is that the concerns on inflation still remain on the radar, and they will do whatever it takes to contain it. So the message is very loud and clear. So there is a pause, but from what markets are taking it as, that there is likelihood of one more rate hike, and the high interest rates to remain high for a long time. So that is a cue, and especially now the if you see the other central banks like the UK and others, are also the indications that they may also go in for hikes. So overall, the environment, if you see the overall atmosphere globally, has been today of nervousness. दीपशिखा जी, यदि हम ऐसा यानी कह लें कि उन मुहावरों का प्रयोग करें कि अमेरिका में वित्तीय जगत में नीतिगत स्तर पर छींक आने के भी आसार हों तो बड़ी गिरावट हो जाती है और हाहाकार मचता है, तो ये हाहाकार क्या हम सिर्फ
उस अंदेशे के कारण माने बाजार में, या वास्तविक चिंता की बात है भारतीय शेयर बाजार की स्थितियों को देखते हुए? मनोज जी, अगर आप देखें, ये आपने कहा कि अगर अमेरिका में छींक आती है तो यहाँ जुकाम हो जाता है जी। तो वो हमने देखा है और पिछले वर्षों में यही दिखाई देता था। अगर आप आज का ट्रेंड देखें, आज जो बाजार की स्थिति है वो उस ट्रेंड को थोड़ा दर्शाती है कि वो ट्रेंड शायद चल रहा है, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस देखें कंपनीज के, अगर आप रिजल्ट्स पे ध्यान दें तो परफॉर्मेंस जो है कंपनीज की बहुत अच्छी थी। इकोनॉमी के अगर आप मैक्रो फंडामेंटल्स देखें तो मैक्रो फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है ओवरनाइट। तो ये जो नर्वसनेस है ये क्या बहुत लंबे समय तक रहेगी? कुछ समय तक तो रहेगी, क्योंकि मार्केट इससे उबर जाएगी। हो सकता है उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, हो सकता है कि कम वक्त में ही हो जाए, क्योंकि डोमेस्टिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत रोबस्ट हैं और वापस मार्केट का ऐसा आशा की जाती है कि उन रोबस्ट फैक्टर्स को मार्केट वापस फोकस में ले आएगी। And Deepshika ji, looking at the fact that all the international markets have also crashed today. I wouldn't say crashed, but they have fallen more than Indian markets. Do you think that the Indian market was very highly valued and it had reached very high valuations? It was overbought, and maybe it has corrected from that point of view also this week? Sonu ji, if you actually see, people have been talking about 20,000. There is also talk about 22,000. So it's also a matter of perception and how people are viewing the markets. There has been talk that there may be some bits of corrections coming in between for providing people with that buying opportunity. If you look at the macroeconomic indicators, Indian economy is standing out globally. If you look at the domestic performance of the domestic companies, they are performing. Now, some of the companies have begun investing also. So, in terms of valuation, I would not go too much into it. It is whether it is too high or too low. But I think we are heading towards robust stock market going forward. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। पहले रुपए की स्थिति पर नजर डालेंगे, फिर उसके बाद वैश्विक बाजारों की ओर चलेंगे। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 1 पैसे मजबूत होकर 83 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 105.47 पर चल रहा था। And now let's move to the international share markets. First, the US markets. US stock index futures declined as growth stocks took a hit from the jump in treasury yields after the Federal Reserve held interest rates steady while hinting at another hike this year. The Nasdaq Composite Index slumped 1.5%, the S&P 500 slipped 0.9%, and the Dow Jones Industrial Index fell 0.2%. आइए अब चलें एशियाई शेयर बाजार, जहां मुनाफा वसूली का दौर भारत की तुलना में अधिक देखने को मिला। बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.3% घाटे में रहा। हांगकांग के हैंग सेंग और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों में 1.2% की गिरावट हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% नीचे आ गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% लुढ़क कर बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक बिकवाली ही दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 1.4% घाटे में था। जर्मनी का डेक्स 1.1% नीचे चल रहा था। लंदन के फुट्सी 100 में 0.2% की कमी समाचार तैयार किए जाने तक देखी जा रही थी। I would just like your, comment on the US situation, the way it's handling the inflation figures now. From 9.1% in June 2022, the inflation figures have come down to 3.7%. So does it justify such a hawkish attitude? We saw that over hawkish attitude in China that led to very negative consequences. You think this could happen here also, and then that could have a boomerang effect on the world economy, India also? Sonu, these concerns were expressed earlier also on the Fed's very hawkish stance, because if you see the language in the previous statements, it was more hawkish. But if you look at the inflation, while it has come down, it is still way above the
target inflation that US Monetary Authority targets. So the function there of the monetary authority is to bring the inflation down to the target level, and till it does not reach the target level, it will continue to raise interest rates. So when we say whether it is more hawkish or less hawkish, it has definitely, we've seen that there is a pause there. It has taken a pause. It has not raised the rates. So they are also cognizant of the impact that it will have on the larger US economy and the impact that it has on the larger markets, global markets. So in fact, if you see in the past, past also, since the global financial crisis, central governors globally, they've been coordinating the interest rate hikes. They've been talking to each other. They've been watching each other's movements. So I think till the time it reaches 2%, the Fed will continue. Okay, so let's move on to the next story, which is the challenge which the world is facing in terms of inflation also. Crude oil prices slipped to $92 per barrel as Fed paused on hikes again. The US Fed held interest rates steady while indicating one more hike before the end of 2023 and fewer rate cuts in next year. In intraday trade, Brent crude was trading down by $1 at $92.53 per barrel. West Texas Intermediate crude price was also trading down by 97 cent at $88.69 per barrel when reports last came in. Although we have seen a slight fall today, but crude prices have breached $90 per barrel and now they seem to be stuck there. How much of a concern is that? It is definitely a concern for the world, and the impact of the OPEC plus trying to manage the production and trying to manage the prices through production cuts is now begun to show. Whether if the economic recovery, economic slowdown in the advanced economies continues for a while, maybe it will cool down, but it is something that it needs to be watched very closely. For an India which imports about 85% of its requirement, it's totally import dependent, it definitely has a lot of implications, especially when we are also we also have a fight in hand on the inflation front. दीपशिखा जी, यहाँ पर तेल के मूल्यों को लेकर वैश्विक व्यवस्था पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। सामान्यतः देखा जाता था कि तेल निर्यातक कंपनियां यानी ओपेक या अन्य समूह जो इससे जुड़ जाते हैं, उनके उत्पादन कटौती के बाद अमेरिका में शेल ऑयल निकालने वाली कंपनियां बाजार में आ जाती थी, लेकिन लंबे अरसे से उनकी कोई यानी चर्चा नहीं हो रही है, वो किसी योजना के अंतर्गत अपने आप को सामने नहीं ला रही, या क्या है तेल के दाम में इस लगातार तेजी के पीछे? तेजी के पीछे तो कारण ओपेक प्लस का ही है। वो चाह रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ें क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो तेल पर ही निर्भर है। हालांकि वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूलतः इसी पर निर्भर है, तो उसका जब दाम गिरता है तो उसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो उनकी कोशिश ये है कि वो उत्पादन कम करके दाम को किसी तरह से बढ़ाएं। आपने कहा शेल का जो लॉजिस्टिक्स रहता है और जो उसका अगर उनको एक लेवल पे ऑयल नहीं होता है तो शेल का प्रोडक्शन जो है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है। तो इसलिए शेल पर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है कि क्रूड के जो दाम थे बीच में बढ़े कम हुए, ये ट्रेंड चल रहा है, तो एक स्टेबिलिटी नहीं रही है प्राइसेस में। और हमने देखा कि गैस के मूल्यों में भी एक तेजी रही यूक्रेन रशिया वॉर के बाद। तो ऐसी उम्मीद की जाती है अगर दाम और बढ़ेगा तो शायद शेल जो है आना शुरू हो। चलिए अंत में चलते हैं सर्राफा बाजार। एमसीएक्स में अक्टूबर आपूर्ति वाले सोने का मूल्य थोड़ा सा घटकर यानी 544 रुपए घटकर 58,861 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 843 रुपए घटकर 72,387 रुपए प्रति किलो पर थी। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से दीपशिखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Deepshika. Thank you so much. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic aviation industry has registered an annual growth of 38.27%. Market witnessed strong selling for the third straight session. Sensex was down 570 points. Nifty slumped and reached at
19,742, and crude oil prices slipped to $92 per barrel as Fed pauses on hikes again. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar. Market Mantra.